Okay, now today we'll discuss, as informed you, the stress analysis. Most important topic from interview point of view, for project point of view, and industrial application point of view. Okay, when we apply any force, right, there is some internal resistance get developed on any component. That internal resistance creates stresses, right? That is known the stress. जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी कंपोनेंट पे, तो उसमें जो है इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्स जनरेट होती है। उससे जो है उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है। स्ट्रेस का नॉर्मली सिंबल सिग्मा है, मैंने अभी नहीं दिया आपको। मैथमेटिकली स्ट्रेस इज अ फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स आर लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है। Now, what are the various type of stresses? That is important. Tensile, compressive. We go in detail all of them. Shear stress, bending stress, torsional stress, bearing stress, contact stress, impact stress, and thermal stress. These are the basically 9 type of stresses that get developed depending on which application it is. ठीक है सर, आगे चलते हैं. Okay, let's go to next. We'll go to tensile stress. Now, stresses are called tensile when the fiber of the component tend to elongate due to the external force. When a body is subjected to two equal and opposite axial pull called tensile load, then stress induced in the section of body is known as tensile stress. So formula is very simple. Force divide cross section area, tensile stress F by A. Now very important part of it, when I check the MTech paper of examination, people use wrong section. टेंसाइल स्ट्रेस में परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन आपने वो एरिया लेना है, परपेंडिकुलर टू द लोड। सर किसी चीज को दिखा के आप वीडियो के सामने दिखाया, नेक्स्ट सेक्शन स्लाइड में दिखाया है, आप नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, पता लगे। देखिए ये आपने लोड लगाया, राइट नाउ जब लोड लगाया तो जो है आप ये एक्सटेंड हुआ, तो ये एरिया लेना है आपको परपेंडिकुलर टू लोड। This is the area you have to take perpendicular to the load. Be careful on this tensile stress. ये आपने फोर्स लगाया तो ये स्ट्रेस डेवलप हुआ। This is the area you have to take perpendicular to the load. Be careful on this. अच्छा, मैं आप क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसको मान लो मैं 45 डिग्री पे लोड लगाऊं तो स्ट्रेस ज्यादा आएगी कम आएगी? देखो जरा सोचो, अगर मैं ये लोड को 45 डिग्री पे टिल्ट कर दूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बता देंगे मुझे, स्ट्रेस ज्यादा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होगी या कम होगी? सी क्या होता है, बाकी सब ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज द टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज एरिया यू हैव टू टेकन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। Now, just to understand whether you understood it, if I tilt this load at 45 degrees, whether stress developed, tensile stress developed would be less or more or same? Yes, less, right, less. Now, how you will come to know how much is less? What is changing? Force is same, direction of application is changing. So what will happen? Area will increase or decrease? When I tilt at 90 degree force area for tensile stress, area will increase or not? Perpendicular to load. That means the area would be perpendicular to the load. So that means area will increase. So stress will be less. If you understand this point, कि कौन सा area लेना है? If you understood, we go ahead. This is a force. तो ये फोर्स हो गया, the force is acting, that is the P. मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में, इट इज पुलिंग ऑन बोथ साइड्स। पुलिंग ऑन बोथ साइड। जब पुलिंग कर रहे हैं तो एरिया आपको लेना है, ये एरिया, इसका जो एरिया है सर, मैंने जो एरो किया है वो वाला, हाँ, जो दैट मींस द स्मॉलेस्ट एरिया, दिस इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द लोड। ठीक है, दिस इज द एरिया यू हैव टेकन। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं इस लोड को टिल्ट कर दूं 45 डिग्री पे,
हाँ तो एरिया जो है ऐसे जो है, दैट मीन ज्यादा एरिया आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द लोड, सो ज्यादा स्ट्रेस, एरिया आएगा। हाँ, तो टेंसाइल स्ट्रेस कम हो जाएगी। करेक्ट ओके, करेक्ट। क्लियर है, सिंपल है ये। ओनली खाली वन पॉइंट इज दैट यू हैव टू टेक परपेंडिकुलर टू द लोड। गॉट इट। Okay, we go to the next. Simple hai. These are very simple things. I try to make it as simple as possible. Next, okay. Now we are talking of compressive stress. इसको भी साथ साथ ले लेते हैं. See, when fiber tend to shorten due to external force, stress is called compressive. When a body is subjected to equal and opposite axial force called compressive load, then the stress induced any section is known as compressive. Now you look at this slide. नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो पता लगेगा। ये है स्लाइड, साइड में दिखाई आपने। हाँ, नाउ पहले क्या था, दैट वाज ए टेंसाइल लोड, राइट। नाउ वी हैव कंप्रेसिव लोड। जब कंप्रेसिव लोड करेंगे तो इसको जो है, जो इंटरनल फाइबर्स हैं वो कंप्रेस होंगे, करेक्ट। इंटरनल फाइबर कंप्रेस होंगे, तो इंटरनल दिस इज कंप्रेसिव लोड, फोर्स इज सेम। नाउ फाइबर्स आर, length of this would be reduced, that means compressed हो रहे हैं, so this is a compressive force. बाकी same concept है, you have to take same axial force, area cross section area, compressive stress this x perpendicular to the cross section. So इसमें force compressive है और पहले में force tensile थी. Now why they are important? Because इनका allowable safety factors are different for tensile and compressive. क्या डिफरेंट है सर? सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर। हाँ, यील्ड स्ट्रेस एंड यूटीएस में जो सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो टेंसाइल और कंप्रेसिव में डिफरेंट रहता है। Maybe as we proceed further, I'll take up these all things. Okay. Now I'll discuss shear stress. Now be careful, when external force acting on a component tend to slide the adjacent plane with respect to each other, the resulting stress is called direct shear stress. I'll explain in a different way. When a body is subjected to equal and opposite force acting tangentially, earlier was acting vertically, now it's acting tangentially. No, not next slide. Tangentially. Now they are acting. This is your force, and this is force. Earlier they were vertically acting. Now they are acting tangentially. Clear? Force acting tangentially. तो इनका पर्पस क्या है? इस रिवेट को शीयर ऑफ करना। तो इंटरनल स्ट्रेस कैसे, इंटरनल फोर्स कैसे डेवलप होगी, ये और ये। So when a body is subjected to equal opposite forces acting tangentially resisting action, as a result which the body tends to shear off of the section, the stress is called shear stress. उनका पर्पस क्या है कि दैट मीन्स अगर ऐसे फोर्स एक्ट कर रही हो, ये और ये, तो जो है they will try to shear off the rivet. We have shown that shear of the rivet, that means the rivet, right? Correct. So that means you develop a, okay, same axial force, cross section area, but you be careful, the cross section area parallel to the force. Now see the difference. Earlier was perpendicular to force. The area was perpendicular to the force. Now area is, next slide देंगे, जो next slide दिखाई थी आपने, इसकी लिए, हाँ। Now area is, देखिए, parallel to the force. Very important. लोग जो है while working they forget which area to take. Shear stress में parallel to the force. See rivet, अगर ये इसको एक्ट कर रहा है, ये इधर एक्ट कर रहा है, तो इस मेंबर पे कोई स्ट्रेन नहीं है, इस मेंबर पे कोई स्ट्रेन नहीं है, लेकिन रिवेट पे रिवेट ट्राई टू शीयर ऑफ। और इसमें क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होती है, स्ट्रेस डेवलप होती है, और दिस इज स्ट्रेन। The strain will get developed because it may not be completely tear off, but there may be strain inside up to some angle, like sliding. Then it develops a strain. So most important part here is parallel to the force. Are you getting my point? Parallel to the force. देखो bending बाद में आएंगे,
let them understand this. Parallel to the force. Clear? Let everybody should say yes, sir. Parallel to the act, parallel to the cross section. फार्मूला सब एक ही दिखते हैं, लेकिन क्या है, कौन सा एरिया लेना है, कौन सी फोर्स लेनी है? Clear है sir? Yes आया है. Okay, चलो, we'll go to next. Now we are talking of bending stress. Now consider straight beam subject to bending moment. दिखाता हूं मैं डायग्राम में. The beam is subject to combination of tensile stress on one side and of the neutral axis and compressive on the other side. Dimensional section of the plane of bending is depth, and the other one is a triangle to the plate of bending is width. Now here the people get confused. These are the basically moment applied, moment of inertia, stress, radius of the curvature, Young modulus, and distance from active fiber. We'll take a next slide, get a clarity. देखिए ना, दोबारा है एक और स्लाइड जरा. हाँ, now I'll take this slide. Now there is a moment acting. There is one moment. This moment is acting like this. Now, as happen, this part will be compressed. When you bend a piece like this, upper fiber will be compressed, right? And lower fiber would be tension. Upper fiber would be compressed. You just imagine एक rod है, उसको आपने ऐसे bend किया, तो upper part of the rod would be compressive, and lower part would be tensile. Now, where people make mistake is when you see this formula. Stress is I is a polar moment of inertia. All this terminology must have been taught to you. I is a polar moment of inertia. I is a moment of inertia, and right now you take up W and H. We go to this slide. Next slide. I'll just show, next. I'll show them what is W, what is H. Now देखिए, ये W है और ये H है. This is W, width, and height is, now you shown D here. Height is this. So the moment of inertia when you take up 1/12 B d cube. B d cube. Be careful. यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं. मॉड्यूल ऑफ सेक्शन इज 1/6 WS स्क्वायर. आपसे ये पूछता हूं, ये सब स्टडी कर लिया है ना आपने? That somebody should say, have you studied these? ठीक है. अभी क्या पॉइंट है जहां मिस्टेक होती है? इवन एमटेक के पेपर मैंने चेक किए हैं और बी के चेक किए हैं. वो W और H D में वो फार्मूले को डायरेक्ट लगा देते हैं. डेप्थ, सी, अगर ये मोमेंट किया है तो डेप्थ इज कॉल्ड, this is H, and other side direction is called width. So you should not take a wrong formula. 1/12 BD cube बोलते हैं हम. B is, this is W is B, and Z is the 1/6 WS square. W is the width and H is the height. So most important part is how you, which portion, which direction, which dimension you take, right? You have to be careful. This is the depth and this is the width. आपने अपने बुक्स में जब पढ़ा होगा तो BD क्यूब किया होगा. This is the depth and this is the B, which is W higher than width. And upper fiber is compressive and lower fiber is tensile. Now आप कहेंगे इसका एप्लीकेशन कैसे होता है? मान लो आप जो है एक बीम फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो आपका वेल्ड यहाँ पे होता है, बीम का टॉप प्लेट, एंड देन यू हैव ए बेसिकली फाइबर. देन आपको ये सेक्शन यहाँ पे जो है, जो स्ट्रेस होगी वो लेना है फॉर वेल्डेड जॉइंट्स. व्हेन वी कम टू दैट, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस, बट ये W और D का ख्याल करना है, बिकॉज देयर कैन बी ए, बाय राइटिंग देयर कैन बी डिफरेंस देयर. सो स्ट्रेस इज M upon I by M by I, and Z is a 1/6 WS square. So M by Z. I by Y is the Z. Now have you understood it? बाकी आपने सब पढ़ा है, लेकिन जहाँ मिस्टेक होती है ये होती है कि लोग W और H को, क्योंकि वो सेक्शन ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, कभी किसी डायरेक्शन में होता है, कभी किसी डायरेक्शन में होता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल
कि व्हाट टू टेक डी, और आप W क्या लेंगे और D क्या लेंगे। उल्टा ले लिया तो सेक्शन गलत हो जाता है। और साइज में मत जाओ, कभी कभी D कम हो सकता है, W ज्यादा हो सकता है। जब इनकी एप्लीकेशन करेंगे तब आपको आइडिया आएगा। क्लियर? बढ़ो आगे। Yes, sir. Okay, let's take next. Torsion stresses. When a shaft is subject to external torque, as showed in the figure, बताइए, internal stresses which are induced to resist twisting is called torsion stress. जब इसको ट्विस्ट करते हैं, रोटेट करते हैं शाफ्ट, a machine member is subjected to action of two equal and opposite couple acting in parallel plane or torque or twisting moment. Then the machine member is subjected to torsion. The stress set by torsion is known torsion stress. Torsion shear stress or torsion stress is maximum at the outer fiber and zero at the axis of rotation. Now let's take a next slide, you will get an idea. देखिए, ये हमने टॉर्क लगाया, इसको रोटेट इधर लगाया, इधर लगाया। सो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होती है, आप देखिए, मैक्सिमम आउटर फाइबर पे स्ट्रेसेस हैं और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, हम आई बीम एक्सल, होलो एक्सल क्यों यूज करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज स्ट्रेसेस एट द सेंटर इज जीरो। आप क्वेश्चन को लिख लो, होलो एक्सल क्यों यूज करते हैं, इसे नॉर्मली आस्क, बिकॉज टॉर्शनल स्ट्रेसेस, होलो एक्सल जो है वो रोटेशन के लिए है, पावर के लिए है, तो स्ट्रेसेस एट द सेंटर इज जीरो, so this material has not taking any stress, so we remove it. That's why we use hollow axle. This question is normally asked, and people who understand, they will immediately reply, because the stresses, torsional stresses develop at the center is zero. Are you getting my point? This is the torque developed, shaft is rotating, and stress is developed. I'm talking a section. That means if you cut a section like this, it's maximum at the outer fiber and zero at minimum center. We are not using. That's why you find shaft or hollow nowadays. Now question comes up, where you use beam and where you use shaft. These are the questions asked, because if you understand this, beam में उल्टा था, आप समझ गए? And then we will go for a deflection torsion study. Now, have you understood? Then we look at further. आपको समझ में आ गया ना? चैट पे डालिए कि समझ में आया या कुछ और क्लियरिटी चाहिए। ये फार्मूले सब आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसके एब्रिविएशन जो अपनी यूज करते हैं उनमें से ले लीजिए आप। लेकिन कंसेप्ट की बात है, कौन सा डायमेंशन लेना है, एंड देन सेकंड इज polar moment is 1/32 d4 and z would be 1/16 d3। वो सब फार्मूले स्टैंडर्ड बुक्स में है। मेन कंसेप्ट आप लेके आएंगे जहाँ पे गलतियां करते हैं लोग एग्जाम में और इवन अदरवाइज बताने में, और लोग इनकी एप्लीकेशन पूछते हैं, डायरेक्ट वो नहीं पूछते। ये कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई यू यूज शाफ्ट, होलो शाफ्ट, व्हाई यू यूज आई बीम। आप बीम पे जाएंगे दोबारा, थोड़ा 2-3 स्लाइड बैक, और थोड़ा और बैक। हाँ देख, बस वही दैट्स इट। नहीं, इससे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ डायग्राम है। हाँ देखिए, इसमें आपकी जो स्ट्रेसेस हैं वो टॉप में है, यहाँ पे सेंटर में। दैट्स व्हाई वी यूजिंग आई बीम, और अदर पार्ट विल टेक केयर ऑफ। यू ऑब्जर्व दैट वी आर यूजिंग आई बीम फॉर स्ट्रक्चर। हम इनका थोड़ा एप्लीकेशन देंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। विल टेक सम। ओके, आगे बढ़े। नहीं आगे बढ़े ना, ये पीछे चले गया। हाँ, बेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है।
एक localized compressive stress at the surface of contact between two member of machine part is bearing stress, crushing stress. Local compression occur between two member held in contact between pin and eye. आप देखेंगे एक पिन होता है, एक आई होता है, दोनों में कांटेक्ट जो है पूरा नहीं रहता, जिधर डायरेक्शन में लोड है वहीं पे कांटेक्ट रहता है. Like hydrodynamic bearing or normal bearing, the pressure distribution will not be uniform. Bearing force will be P F divided by L by D. L is the length of the bearing and D is the diameter. So length of the pin, D is the diameter of the pin. This is a project area. Now very difficult to find out what exactly it is. This is normally done by the FE analysis, but this gives you reasonable accurate when you take a projected area. नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो क्लियर होगा. देखिए नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो हाँ देखिए. नाउ दिस इज ए फोर्स एक्टिंग. दिस इज इंटरनल हेयर. सो दिस इज द फोर्स. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेयरिंग प्रेशर इज लाइक दिस. सो व्हाट वी डू इज वी टेक अप द डायमीटर एंड द अदर साइड वट एवर लेंथ ऑफ द पिन. तो L by D is the area. That is the bearing pressure. L F divided by L into D. The more concept here is which area to take. And once you understand the concept, you will take the proper area. People mix up and then everything goes wrong. In bearing, because we take D and length of the pin. This is the pin and this is the eye. This is the contact point. This is stress distribution, bearing stress distribution, and we take up the L, length of the pin, and D, L and D. That is the area. बाकी आपने सब पढ़ा है, लेकिन यहाँ गलतियां होती हैं वो ये हैं. ओके ना? हाँ ओके. रिपीट. नाउ व्हाट हैपन है, आप कभी भी देखिए एक पिन रहती है और एक आई रहता है. तो पिन और आई में पूरा कांटेक्ट नहीं रहता है. जिस डायरेक्शन में लोड है उसी डायरेक्शन में कांटेक्ट रहता है. तो आपको जो एरिया लेना है वो डायमीटर ऑफ द पिन एंड द लेंथ ऑफ द पिन. L एंड D. L into D. फोर्स तो आपको पता ही है जो आएगी कैलकुलेशन. सो यू हैव टू टेक एरिया, लेंथ ऑफ द पिन इन कांटेक्ट एंड डायमीटर ऑफ द पिन. L into D is the project bearing area. क्योंकि इसको एग्जैक्टली पता नहीं है, बट दिस गिव्स यू 97% करेक्ट वैल्यू. L into D. इट्स ओके नाउ. आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ना, किसी का आपका कोई भी पिन लेंगे. मैं एग्जांपल आगे सबका लूंगा ना. I'll stop at this place and give you example. Otherwise what happen is just understand basically. कहीं पे भी कांटेक्ट आपका देख लीजिए ना. आप इंजन में क्रैंक में जहाँ पे बेरिंग नहीं है, खाली आपका जो है शाफ्ट और द आई है, तो वहां पे जो है you are only doing this when there is no radial bearing or other bearings. So then you have to take this area D and in length of the pin for to calculate the stress. Now आप कहना चाहेंगे स्ट्रेस क्यों कैलकुलेट करना है. Then that will determine what is the diameter of the pin will take. What is the length of the pin will take. Normally L by D ratio is length is double of the diameter of the pin. So we decide how much diameter to be taken, how much allowable stress once we calculate. So मैंने आज खाली stress analysis लिया है, उसके दूसरे चैप्टर है. Then I'll tell you how to take other things. Okay? Will you be, sir? I think I would suggest you to give examples of every stress, practical example. No, I thought example will give it later on. Let them understand the name. I'm going to repeat everything. Okay. Because let them even understand what are the various stresses. Correct. Because they should not confuse with various stresses. Correct. And we are going to take examples. In next session, I'll take all the examples of them. So I think, sir, I think we have done till 16th slide. We have done till bearing stress. So in सारे students bearing stress तक एक बार पढ़ लेंगे fundamentals.
और अगली क्लास में आप बियरिंग स्ट्रेस तक एग्जांपल्स लेके आएंगे। हाँ जी, ओके। देन एक बार जरा देख लो स्लाइड, कुछ नहीं है, we'll only see the slides. ओके, नेक्स्ट। कॉन्टेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? जैसे व्हील और रेल है, कैम एंड पुलोवर है, बाल एंड रेस है, पेयर ऑफ मैचिंग गियर है, so all these have a contact stress. चलो नेक्स्ट। then I'm only mentioning, we'll take up this. तो ये इसका जो है इक्वेशन आप अपनी किताब में से लेके लिखो। then crash, नेक्स्ट। इम्पैक्ट, जब कोई चीज फॉल होती है, that is by impact. okay, next just I'm mentioning the name. अगर हाइट, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, just to let them know थर्मल स्ट्रेसेस, जब हीट करते हैं और दोनों तरफ कंस्ट्रेन है तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती है। सो विल टेक अप लेटर ऑन ऑल दिस एग्जांपल, विल टेक अप टू दोस स्ट्रेसेस जो आपने बोला है। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन। सर ये लास्ट है। हाँ, नहीं अभी हमने कराया नहीं है, हमने खाली बताया इनको, लेट देम स्टडी, बिकॉज दे हैव बीन टॉट इन द सिलेबस, दे विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, और सबके एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। So sir, I not done this. I just only mentioned what are the various type of stresses. So today we have learned the various type of stresses as a part of our holistic approach to engineering design. Right. अब हर एक स्ट्रेस का जो हमने पढ़ा है उसके हम एग्जांपल्स लेंगे। Correct. Tensile, compressive, bearing, and उसके बाद बाकी स्ट्रेसेस भी बताएंगे उसके जो हमने नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। And torsional, 4, 4. बेंडिंग एंड टॉर्शनल, 5 से कौन से 4 बताएंगे? टेंसाइल अभी बताएंगे, टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेयरिंग एंड देन बेंडिंग एंड द टॉर्शनल, ये 5 तो बताए हैं, इनके एग्जांपल लेना है। शियर स्ट्रेस है सर, शियर स्ट्रेस भी है। हाँ हो गया ना, दैट मींस टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग एंड टॉर्शनल और बेयरिंग, और ये तीनों स्ट्रेसेस के हम एक्सप्लेन करेंगे और इन सब के एग्जांपल लेंगे। करेक्ट, 5 स्ट्रेसेस के एग्जाम्पल लेंगे, और अगर फिर बाद में लगेगा टाइम बचा तो ये तीनों स्ट्रेस लेंगे, नहीं तो बाद में लेंगे। बट लेट देम स्टडी दिस, दे वुड नॉट बी इन वन चैप्टर, दे वुड बी इन वेरियस चैप्टर, वेरियस प्लेसेस, सो दे हैव टू पिक अप, बट दे मस्ट बी टॉट एट डिफरेंट प्लेसेस, समथिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, समथिंग इन मशीन डिजाइन, समथिंग इन थ्योरी, सो दे हैव टू कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट, ओके। इज दैट क्लियर गाइस? Can I get a quick yes? Is that point clear? 5 जो पहले 6 स्ट्रेसेस हैं इनके एग्जांपल लेंगे, और ये 3 जो स्ट्रेसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी, कॉन्टैक्ट, इम्पैक्ट एंड थर्मल। ठीक है, ऑलराइट, ओके सर, ओके, राइट, थैंक यू सर, राइट, इट्स ओके, थैंक्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। So, short sessions, but quite useful in helping and understanding the project work as well as fundamentals of various questions on the mechatronics interview. So keep learning these things, very, very important. And next week, we are going to learn about the application of the first 6 stress that sir mentioned, along with an understanding of the remaining 3 stresses.